गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग प्यारे बच्चों. In this video, today we will be discussing about refraction of light. So, to start with, let's take the things from your previous knowledge. You have studied refraction during your class 10th and some of the glimpses of that particular study. Okay, first I am taking and then we will be taking ahead the topic with more discussion. Okay, so as you have studied refraction of light, okay, basically is phenomena of bending of light when it goes from one medium to another medium. ऐसा ही था ना? Refraction of light, phenomena of bending of light when it goes from one medium to another. 10th क्लास में आप लोगों ने यही पढ़ा है ना? That time, to define the nature of medium, you were using these terms: rarer medium and denser medium. Basically, this is, if we define it accurately, rarer medium basically means optically rarer medium. Optically rarer medium. And the denser medium basically means the optically denser medium. Okay? And you used to say it like this, that when the light goes from rarer to denser medium, it goes towards the normal. Yes, you are defining it like this. It goes towards the normal. Now, what is normal? Normal क्या होता था? Just think of a line drawn perpendicular to the interface. Interface is the line dividing both the mediums. Okay, perpendicular, line perpendicular to the interface, हम उसको normal कहते थे. Normal, है ना? And you used to say this particular ray as the incident ray, and this particular ray as the refracted ray. Refracted mean it has undergone refraction. Fine. And the second thing which you used to say, that was कि when light goes from denser to rarer medium, denser, optically denser medium to optically rarer medium, it goes away from normal. It goes away from normal. This perpendicular line is basically a normal. You used to say like this. Okay, this ray in that very case will be incident ray, and this ray in that very case will be the refracted ray, which has undergone refraction. Fine. Now, if we talk of angles, incident ray making with normal, you were writing it as I, angle of incidence, and the refracted ray making with normal, this angle, you were writing it as R, angle of refraction. It's okay. Now, in the scenario, in this particular situation, incident ray making with normal, this is the angle, okay, and this particular thing will be angle of incidence, and this particular angle, refracted ray making with normal, this basically is angle of refraction. It's okay. It's fine. Yes. So now, after this, on the basis of these particular things, okay, you used to define a term called refractive index. है ना? Light is going from this medium to this medium. If this is, say, medium 1, this is medium 2, you used to write the refractive index like this. In detail, we will be taking it afterward. 1 mu 2.
है ना, लाइट इज गोइंग फ्रॉम 1 to 2, सो यू यूज टू राइट इट 1 mu 2, refractive index of medium 2 with respect to refractive index of medium 1, and you were writing it like this, it is equal to sine of I over sine of R. इट्स ओके। और इस पर्टिकुलर सिचुएशन को हम क्या कहते थे, याद करो जल्दी से, स्नेल्स लॉ। यस, कुछ ऐसा सा डिस्कशन आपका 10th क्लास तक रहा है। ओके फाइन, कुछ इतना आप जानते हो। नाउ टू टेक इट ahead to the level of class 12, okay, we will be introducing some more things. Okay, so to understand those all things, fine, let's first define the refractive index. Okay, now what basically is refractive index? Now, refractive index of a medium, okay, you know, refractive index, absolute value of refractive index of a medium basically is defined using the velocity of light. Okay, now absolute value of refractive index of any medium is equal to ratio of speed of light in vacuum, okay, to the speed of light in medium. अब देखो, vacuum, you know, vacuum we can't have everywhere, है ना, तो वैक्यूम के साथ हम थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन करके एयर भी लगा देते हैं, नो प्रॉब्लम। स्पीड ऑफ लाइट इन एयर टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, इट्स ओके। दिस विल डिफाइन, like this we define absolute value of refractive index. It's okay. It is written by the Greek letter mu. Speed of light in vacuum or air, we write it by C, that is 3 into 10 to the power 8 meter per second. With respect to speed of light in medium, let that is V. It's okay. Like this we define the absolute refractive index of a medium. Okay. Absolute values of some of the mediums for your information is given here. जैसे diamond has highest refractive index, that is 2.42. Crown glass, this is one of the type of glass, 1.52, that is quartz 1.54, sodium chloride 1.54, ice at 0 degrees Celsius 1.31, okay, water at 20 degrees Celsius, okay, 1.33, ethyl alcohol 1.36, carbon disulfide 1.63, benzene 1.50, air at 0 degrees Celsius and 1 atmospheric pressure. Fine, we have taken pressure into account because gases pressure के हिसाब से उनका density भी change करता है ना। तो air का जो refractive index है at 0 degrees Celsius and 1 atmosphere pressure 1.000293. Oxygen gas has 1.000271. Hydrogen gas has 1.000139 and carbon dioxide has 1.00045. ठीक है, तो ये कुछ वैल्यूज आपके इंफॉर्मेशन के लिए, ओके, इनको थोड़ा दिमाग के अंदर रखना। फाइन,
when light goes from one medium to other, okay, one medium to other, ठीक है, तब जो हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को डिफाइन करते हैं, वी डिफाइन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एज relative refractive index. Okay, now how we define relative refractive index? Now suppose we have medium 1, this is another medium 2, light is going from say 1 medium to 2 or 2 to 1, whatever, ठीक है, say light is going from one medium to 2, then we will be writing the refractive index something like this, 1 mu 2. Refractive index of medium 2 with respect to refractive index of medium 1. Refractive index of medium 2 with respect to refractive index of medium 1. It's okay? Absolute refractive index of medium 2, 1 mu 2, okay, absolute refractive index of medium 2 with respect to absolute refractive index of medium 1. It's okay. Now in terms of velocity of light in the medium, we can write it like this, 1 mu 2. This is refractive index of 2 with respect to refractive index of 1. It's okay. Now refractive index of 2, refractive index of 2, absolute refractive index क्या लिखा जाएगा? Okay, velocity of light in vacuum or empty space with respect to velocity of light in the medium, suppose v2 है. It's okay. Now absolute refractive index of medium 1, same way, velocity of light in vacuum or air divided by velocity of light in medium 1. Solving this, we get C and C will cancel and we will be getting V1 by V2. It's okay. Refractive index of medium 2 with respect to medium 1 is equal to ratio of velocities, that is velocity of light in medium 1 with respect to velocity of light in medium 2. So we write the relative refractive index, okay, in terms of ratio of velocities like this. It's okay. Now to understand the things better, let's take some situations. Okay, suppose the light is going from rarer medium, this medium is a rarer medium, to denser medium. It is going towards the normal, okay, denser medium. Now suppose the light when entering from rarer medium, its frequency is nu1, okay, its velocity is say v1 and its wavelength is lambda 1. Fine, ठीक है. Now suppose rarer medium is air, ठीक है, प्रॉब्लम को थोड़ा सिंपल भी कर देते हैं. Denser medium is any denser medium. Okay, now यहां पहुंचने के बाद what will be the value of frequency, ठीक है, सपोज ये जो nu2 है इसका nu1 के साथ क्या लिंक होगा, what will be the value of velocity, मीन v2 का v1 के साथ क्या लिंक होगा, एंड वेवलेंथ lambda 2 का इनिशियल वेवलेंथ के साथ क्या लिंक होगा. When the light is going from rarer to denser medium, how the frequency, velocity and wavelength of the light will change. Let's have that exposure. Now frequency, if we talk of, that is the basic character of light. देखो रेड लाइट आ रहा है तो वो रेड ही रहेगा,
The basic nature of color will not change, and basic nature of a color is defined by its frequency. So there is no change in frequency when light goes from one medium to another medium. So nu1 will be equal to nu2, that is frequency remain same. It's okay. So what about velocity? Now this is denser medium. This is having refractive index mu, okay, with respect to this medium, that is air. Mean ये इसका absolute refractive index है. Why? Because we are defining it with respect to refractive index of air. Okay, ठीक है. Another medium which is considered, that is air. Fine. Now, as the light goes from rarer to optically rarer medium to optically denser medium, okay, its velocity reduces by a factor of refractive index. Mean V2 will be equal to V1 by mu. It's okay. The velocity reduces by a factor of refractive index. It's okay. Now what happens to wavelength? अब देखो, frequency जो होता है, frequency is equal to velocity of light divided by wavelength. यही होता है ना. अब जितना फैक्टर से वेलोसिटी चेंज होगा, फाइन, ड्यूरिंग रिफ्रैक्शन, उतने ही फैक्टर से वेवलेंथ को चेंज होना पड़ेगा. व्हाई? बिकॉज रिफ्रैक्शन में फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं हो रहा है. इट्स ओके. So what will be happening to wavelength? Wavelength will also be reducing. Wavelength lambda 2 will be equal to lambda 1 by mu. That is, wavelength also reduces by a factor of mu. Like this, जो हमारे different things related to light हैं, frequency, velocity and wavelength, वो इस तरह से रिफ्रैक्शन के सिचुएशन में चेंज करते हैं. ठीक है. और एज द लाइट विल बी गोइंग फ्रॉम डेंसर टू रेरर, फ्रीक्वेंसी विल बी रिमेनिंग सेम. वेलोसिटी विल इंक्रीज बाय अ फैक्टर ऑफ म्यू, एंड वेवलेंथ विल ऑल्सो इंक्रीज बाय अ फैक्टर ऑफ म्यू. ठीक. नाउ लेट्स टेक इनटू अकाउंट कि why the refraction is happening. Cause of refraction. देखो, एक सिंपल सा सिचुएशन ले लेते हैं. ये रेयर मीडियम है एंड दिस इज डेंसर मीडियम. इस मीडियम में जो लाइट है वो है, वेलोसिटी ऑफ लाइट जो है वो v1 है, और इस मीडियम में v2 है. इट्स ओके. ठीक है. नाउ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मीडियम 1, मीडियम 2. तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन द सिनेरियो विल बी 1 mu 2. सपोज लाइट हमारा रेयर से डेंसर में जा रहा है. फाइन. इट इज गोइंग टुवर्ड्स द नॉर्मल. तो 1 mu 2 विल बी इक्वल टू, दिस इज नॉर्मल, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ओके. And 1 mu 2 using Snell's law can be written as sine of I. Light 1 से 2 में जा रहा है, ठीक है ना. तो एंगल ऑफ इंसिडेंस जहां से जहां जा रहा है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, ऑलवेज दिस विल बी हैपनिंग. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विल बी 1 to 2 sin I by sin R. It's okay. ठीक है. Now this 1 mu 2 is written as refractive index of 2 with respect to refractive index of 1. Yes, and in the form of ratio of velocities. This is written as v1 by v2. Okay, ये इक्वेशन हमें रिफ्रैक्शन के बारे में सब कुछ बता देते हैं. It's okay. Now,
Refraction happens because when the light goes from one medium to another medium, okay, its velocity changes. सिर्फ इस velocity change के कारण, इस velocity change के कारण refraction होता है. So जिस सिचुएशन में भी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगा, उसका वेलोसिटी चेंज करेगा, और वेलोसिटी चेंज करेगा मीन द रिफ्रैक्शन इज हैपनिंग. अब ये लाइट बेंड क्यों कर रहा है? इट इज बेंडिंग बिकॉज इसका वेलोसिटी चेंज हो गया है. समझ में आया? तो रिफ्रैक्शन को अगर हम ये कहें ना कि रिफ्रैक्शन बेसिकली इज फिनोमिना रिलेटेड टू चेंज इन वेलोसिटी ऑफ लाइट व्हेन इट गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, तो वो गलत नहीं है. ओके, दिस डेफिनेशन बेसिकली इज द रियल डेफिनेशन ऑफ रिफ्रैक्शन. दैट रिफ्रैक्शन is defined as phenomena related to change in speed of light when it goes from one medium to another medium. अब देखो, आपके 10th क्लास में आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड कुछ चीजें बताई गई थी. जरा उसके ऊपर थोड़ा सा लाइट डालते हैं. लाइट गोज फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम, इट गोज टूवर्ड्स द नॉर्मल. बताया था, है ना? Rarer to denser medium, it goes towards the normal. Light goes from denser to rarer medium, it goes away from normal. ऐसे goes away from normal. ठीक. अब सपोज करो मैंने सेम रेयर डेंसर का पेयर ले लिया. ये रेयर, दिस रेयर सेम, दिस डेंसर सेम. अब यही रेयर मीडियम और डेंसर मीडियम मैंने ले लिए, और व्हाट आई एम डूइंग, ये स्पेशल्स आपको स्पेसिफिकली बताया गया होगा, ठीक है ना? एंड दिस इज अ मैटर ऑफ ग्रेट कंफ्यूजन. देखो, इंटरफेस रेयर मीडियम, डेंसर मीडियम. लाइट इज मेड टू इंसिडेंट ऑन द इंटरफेस नॉर्मली. क्या होता है इस सिचुएशन में? एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 है ना, तो देयरफॉर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी 0 होता है और लाइट सीधी निकल जाती है. अब ये बताओ, ये सिचुएशन ऑफ रिफ्रैक्शन है या नहीं? क्लास 10th में आपको स्पेसिफिकली टीचर ने शायद ये कह दिया हो कि दिस इज नॉट अ सिचुएशन ऑफ रिफ्रैक्शन. ठीक, तो आप ध्यान से आप इस डेफिनेशन को देखो. Refraction of light, phenomena related to change in speed of light, okay, when it goes from one medium to another medium. Now come to the scenario. Light is going from rarer to denser medium. Okay, light, यहां पे सपोज करो रेयर मीडियम अपना एयर है. ओके, सेम वहां पे भी हमने एयर लिया था पहले सिनेरियो में. एयर में वेलोसिटी ऑफ लाइट c. अब डेंसर आ गया मीडियम से ग्लास और वट एवर, ठीक है, से ग्लास. यहां वेलोसिटी ऑफ लाइट भी हो गया. अब मुझे सिंपल, इफ यू नो, अगर आप यहां पे ये कह रहे हो कि दिस इज नॉट अ सिचुएशन ऑफ रिफ्रैक्शन, तो मेरे एक सिंपल से क्वेश्चन का जवाब दो, क्या वेलोसिटी ऑफ लाइट इस मीडियम में और इस मीडियम में सेम है? योर ब्रेन मस्ट बी सेइंग कि नहीं, सेम नहीं है. तो फिर जब आप जो डेफिनेशन मैंने आपको वेलोसिटी की टर्म में अभी बताया है उसके बारे में व्हेन यू विल बी थिंकिंग, तो आपका ब्रेन क्या रिस्पॉन्स दे रहा है कि दिस इज अ सिचुएशन ऑफ रिफ्रैक्शन और नॉट? दिस पर्टिकुलर सिचुएशन इज वेल अ सिचुएशन ऑफ रिफ्रैक्शन. ओके, बिकॉज व्हेन द लाइट इज गोइंग फ्रॉम दिस पर्टिकुलर मीडियम टू दिस पर्टिकुलर मीडियम, द वेलोसिटी ऑफ लाइट इज चेंजिंग. ओके, because the change in velocity is taking place, therefore क्या हो रहा है? Refraction is happening, and this is well a case of refraction. Yes, this is a case of refraction. Hope you have understood whatever I told you. बिल्कुल बेसिक चीजें मैंने आज आपको बताई हैं. Okay, go through this all. ठीक है, this is given in book also. Go through book. Fine. And if you find any kind of confusion, let me know about.
We will be taking that particular thing in next lecture. Okay, thank you. Have a nice day.